And speaking of learning, uh, I remember, it's like, just think about this. How many things you've learned in your life? There was a time in your life when you could not brush your teeth. There was a time in your life when you could not change your own clothes. There was a time in your life when you could not, you know, you could not ride a bike. I remember जब मैंने साइकिल चलाना सीखी थी. It's like कितना शुरू में जब साइकिल आप चलाना शुरू करते हैं, it seems such a difficult task to do. It's like you have to maintain your balance, and then जब बैलेंस आ जाए तो फिर आपने वो पैडल की आपकी सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है. इट्स लाइक जब आप आगे वाला पैडल डाल रहे हैं तो पीछे वाले पैर के ऊपर से कभी कभी वो चोट भी लग जाती है उसके अंदर. एंड देन यू हैव टू हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर हैंड्स. आप आगे और पीछे की ब्रेक अगर गलती से कभी ज्यादा स्पीड में आगे की ब्रेक जज्बात में दबा दी तो साइकिल स्किड होने लगती है. बट it's like it's all difficult in the beginning. However, as you continue, as you keep on doing it, as you keep on practicing, as you keep on doing it and keep on practicing and more and more, you find that you become more and more comfortable with that. Okay, that's how it works. That's how it has always worked. Okay, and if you think about anything that you've learned in your life, you will find it was not so easy in the beginning. Even the task of reading, for example, शुरू में हमें it's like I remember मुझे it's like अलिफ बे पे जब पढ़ाया जाता था, so बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ते, वो बार बार हम दोहराते थे, रिपीट करते थे. And कर करके it's like we started believing some things. We started believing कि इस इन शक्लों के ये माने हैं. Okay, और फिर क्या हुआ कि हमने लाइक हम उन हरूफ को जोड़ते थे आपस में और उनको जोड़ के वी यूज्ड टू मेक वर्ड्स. बे अलिफ बा 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 जीम अलिफ जा बाबा जा ते अलिफ ता लाम अलिफ ला ताला बाबा जा ताला ला. वी यूज्ड टू मेक दोस काइंड ऑफ स्मॉल स्टेटमेंट्स. और हमने छोटे छोटे हरूफ को. बट जस्ट थिंक अबाउट दिस, जिस वक्त हम सीख रहे थे, आप सीख रहे थे, आपने जो भी कुछ सीखा, आई बिलीव यू हैड दिस सिमिलर प्रोसेस. आपको भी इसी तरह से कुछ अल्फाबेट्स दिखाए गए. Okay, you looked at those alphabets and then you started repeating the sounds that associated with those alphabets, and you repeated them and again and again and again. You repeated them long enough that you started believing what those pictures mean. Now think about this. When you were learning that, there was just another child, just like yourself, another child who was learning in exactly the same way. That child, just like yourself, was shown some images, okay, similar images, and it's like was told to repeat sounds just like yourself. That child was repeating them again and again and again and again, and until a time that child also started believing the images that he or she was seeing. Those images have those meanings that child had assigned. Just like yourself, that child did the same thing. Here's the thing. Perhaps, you were learning English, but that child was learning German, or maybe French, or maybe Spanish. Okay, maybe आप उर्दू सीख रहे थे, वो अरबी सीख रहा था. Okay, आप बे कह रहे थे, वो बा कह रहा था. आप ते कह रहे थे, वो ता कह रहा था. Okay, so it's like, similar images, different meanings, different sounds. जब वो बच्चा बड़ा हुआ और उसने बोलना सीखा, और उसने उन हरूफ को मिला के और जुमले बनाना सीखे, और उसने बोलना सीखा, वो एक मुख्तलिफ ज़बान, इवन दो सिमिलर हरूफ थे मगर उसके माने बिल्कुल डिफरेंट. इससे एक बात पता चलती है, और वो ये कि हर वो चीज जो जिंदगी में आपने सीखी या मैंने सीखी या किसी ने भी सीखी, उसके सिर्फ वो माने नहीं है जो माने मैंने या आपने सीख लिए, बल्कि उसके कुछ और माने भी हो सकते हैं. और कभी कभी हम चीजों को जो माने दे रहे होते हैं, it's like we tend to make this mistake. We tend to believe जो माने मैंने समझे हैं वही माने हैं. Okay, and that's where we get into a problem with this. So, and that's how we get into a hypnotic trance. Okay, so coming back to this idea of hypnosis. हिप्नोसिस की जो बुनियादी चंद डेफिनेशंस हैं, उनमें से एक डेफिनेशन बहुत ही आसान सी, it's a naturally occurring sleep-like state. It's a naturally occurring state in which suggestions have an exaggerated impact upon the person experiencing it. एक कुदरती तौर पर रूनुमा होने वाली एक जहन की ऐसी कैफियत है जिसमें कही जाने वाली बात का असर सुनने वालों के ऊपर कई गुना ज्यादा और बढ़ चढ़ कर
Okay, so it's like एक शख्स कुछ कह रहा है और कुछ लोग सुन रहे हैं, और जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुनने वाले के जहन पर उसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा हो रहा है। एंड इसमें एक चीज है, इट्स अ नेचुरली अकरिंग, ओके, इट्स अ नेचुरली अकरिंग स्टेट ऑफ माइंड। ये कुदरती तौर पे रूनुमा होती है, ये खुद ब खुद होती है, ये नेचुरली होती है। Okay, so that's one of the first definition